Of the Panda, welcome to Master of English, Pile Biology, Botany set 10. या पूर्व नौटा सेट माने एग्जाम पूर्व मुझे आलोचना करी नौटा सेट तो ये हूँ 10 नंबर सेट पिले एमसीक्यू 10 नंबर सेट लाइव सेशन रे सबुतक वीडियो अच्छी जो मैंने देखी ना एवं भी देखिपार ओके पाखापाखि 150 ऊर्ध सिलेक्टेड एमसीक्यू आम अलरेडी आलोचना कर तो जो मैंने भी जॉइन करुचे क्लास रे से अनुरोध कि से फटाफट शेयर करदे जो जो ग्रुप रे से अच्छा फल सांग मैंने भी जॉइन करेंगे तो विलंब करवानी पिले काली परीक्षा अच्छी तो आजिटा हूँ गुरुत्वपूर्ण तो से परिप्रेक्षी यही सेसनटा तो पिले प्रथम प्रश्न अच्छी तुम फर्स्ट क्वेश्चन हूँ एम्ब्रियो एक्सिस अबव द कटिलेडन इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो एक्सिस अबव द कटिलेडन इज कॉल्ड एज ऑप्शन ए एपिकॉटिल बी हाइपोकॉटिल सी फ्यूनिकल डी राफे ये चारिटा ऑप्शन अच्छी प्रश्नटी थिला एम्ब्रियो एक्सिस अबव द कटिलेडन इज कॉल्ड एज ठीक उत्तर हूँ इट इज कॉल्ड एज एपिकॉटल ऑप्शन ए हूँ ठीक उत्तर कौन कह जाए एम्ब्रियो एक्सिस अबव द कटिलेडन इज कॉल्ड एज एपिकॉटल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 कौन अच्छी फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ पोलर न्यूक्लियाई ऑफ एम्ब्रियो सैक इज नोन एज कौन पिले Fusion of male gamete with polar nuclei of embryo sac is known as option A double fertilization, B embryogeny, C pollination, D triple fusion. ये चारोटी ऑप्शन तुम पाखे अच्छी कौन हम पिले कौन हम ठीक उत्तर कौन फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ पोलर न्यूक्लियाई ऑफ एम्ब्रियो सैक इज नोन एज इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन ऑप्शन डी ट्रिपल फ्यूजन इज द राइट आंसर ट्रिपल फ्यूजन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड Vegetative fertilization is also called option A triple fusion, B true fertilization, C syngamy, D generative fertilization. चारोटी ऑप्शन हम पाखे अच्छे पिले प्रश्नटी थिला वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड कौन कह जाए सो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन ऑप्शन ए द राइट आंसर इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 discontinuous variations are option A acquired character, option B mutations, option C essential features, option D non essential feature चारोटी ऑप्शन अच्छी कौन थिला प्रश्न discontinuous variations are option A acquired characters, B mutation, C essential features, D non essential feature ए भीतर ठीक उत्तर होची discontinuous variations are also called as mutations option B mutation होची बिले ठीक उत्तर परवर्ती प्रश्न देखिबा क्वेश्चन नंबर 5 पाखरे पहुंची जामे when a hybrid tall pea plant is cross fertilized with a dwarf pea plant the ratio of tall to dwarf plants grown from the seeds will be option A 3:1, B 2:1, C 1:3, D 1:1 ये चारोटी ऑप्शन हम पाखे अच्छी ठीक उत्तर हूँ व्हेन ए हाइब्रिड टॉल पी प्लांट इज क्रॉस फर्टिलाइज विथ ए ड्वार्फ पी प्लांट द रेशियो ऑफ टॉल टू ड्वार्फ प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम द सीड्स विल बी इट इज 1:1 ऑप्शन डी हूँ ठीक उत्तर 1:1 क्वेश्चन नंबर 6 पिले 6 नंबर प्रश्न कौन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक्सप्लेन्स expression of recessive character in law of segregation explains expression of recessive characters in option A parental generation, B F1 generation, C F2 generation, D all of these प्रश्न थिला law of segregation explains expressions of recessive character in ठीक उत्तर होची F1 generation कौन हम F1 generation option B होची ठीक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर प्रश्न दिला which RNA carries the genetic message from nucleus to ribosome which RNA carries the genetic message from nucleus to ribosome option A mRNA, B pNA, C prion, D protein तो राइट आंसर वुड बी इट इज mRNA ट्रांसक्रिप्शन
कौन पिले सॉरी yes m small m RNA, it is small m RNA. So which RNA carries the genetic message from nucleus to ribosome? It is mRNA, small m RNA. Next question, question number 7. Question number 7 कौन पिले transcription is the formation of dash. Transcription is the formation of dash. Option A small m RNA, B PNA, C prion, D protein. ठीक उत्तर कौन? ट्रांसक्रिप्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ mRNA. ऑप्शन ए होची ठीक उत्तर mRNA. परवर्ती प्रश्न क्वेश्चन नंबर कोटा पिले 10. क्वेश्चन नंबर 10 कौन पिले 10 होची जेनेटिक कोड इज. जेनेटिक कोड इज ऑप्शन ए सिंगलेट, बी डबलेट, सी ट्रिपलेट, डी नॉन ऑफ द अबव. सो जेनेटिक कोड इज ऑप्शन ए सिंगलेट, बी डबलेट, सी ट्रिपलेट, डी नॉन ऑफ द अबव. ठीक उत्तर कौन? द राइट आंसर वुड बी जेनेटिक कोड इज ऑप्शन सी ट्रिपलेट. जेनेटिक कोड इज व्हाट? ट्रिपलेट. क्वेश्चन नंबर सॉरी 9 सरला 10 देखिबा. 10 कौन? द क्लॉट बस्टर CLOT क्लॉट बस्टर. द क्लॉट बस्टर प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस and modified by genetic engineering is called. कौन पिले आउतर कहूची the clot buster produced by streptococcus and modified by genetic engineering is called. Option A streptokinase, option B penicillin, C streptocils, D cyclosporin. चारोटी ऑप्शन. ठीक उत्तर कौन पिले? ठीक उत्तर होची the clot buster produced by streptococcus and modified by genetic engineering is called streptokinase. streptokinase ऑप्शन ए होची ठीक उत्तर. क्वेश्चन नंबर 11 पाखु जिबा. क्वेश्चन नंबर 11 कौन? ड्यूरिंग sewage treatment biogases are produced which include. During sewage treatment biogases are produced which include option A methane, oxygen, hydrogen sulfide, option B hydrogen sulfide, methane and sulfur dioxide, option C hydrogen sulfide, nitrogen, methane, option D methane, hydrogen sulfide, carbon dioxide. ठीक उत्तर कौन with the right answer? So during sewage treatment biogases are produced which include methane, hydrogen sulfides and carbon dioxide. Next question, question number 12. A good producer of citric acid is. Good producer of citric acid is. Option गुड़ी कहूची Pseudomonas, B Clostridium, C Saccharomyces, D Aspergillus. Aspergillus. ठीक उत्तर होची a good producer of citric acid is. It is option D Aspergillus. Aspergillus होची ठीक उत्तर. क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न कौन पहले ट्रिपल फ्यूजन इन एंजियोस्पर्म. ट्रिपल फ्यूजन इन एंजियोस्पर्म्स इज द फ्यूजन ऑफ सेकंड स्पर्म विथ डैश. ट्रिपल फ्यूजन इन एंजियोस्पर्म्स इज द फ्यूजन ऑफ सेकंड स्पर्म विथ डैश. ऑप्शन ए 1 antipodal cell and 1 synergid cell, option B 2 antipodal cells, option C 2 synergid cells, option D 2 polar nuclei. So what is the right answer? The right answer would be triple fusion in angiosperms is the fusion of second sperm with 2 polar nuclei. So option D the right answer. Question number 14 पिले 14 नंबर प्रश्नटा कौन? Total number of nuclei involved in double fertilization in angiosperms are. Option A 2, option B 4, option C 5, option D 6. प्रश्न दिला total number of nuclei involved in double fertilization in angiosperms are. Option A 2, option B 4, option C 5, option D 6. So the right answer is it is total number of nuclei involved in double fertilization in angiosperms are. It is 5. Option C होची ठीक उत्तर पिले. परवर्ती प्रश्न देखा पिले. परवर्ती प्रश्न कौन? Pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen having a temperature of dash. Pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen having a temperature of dash. Option A -120 degrees C,
B minus 80 degree C, C 196 degree C, minus 196 degree C, D 1 minus 160 degree C. The right answer is it is minus 160 degree Celsius. Question number 16. The equation an inverse n by n represents which of the following? Which of the following? Option A natality, option B growth rate, option C mortality, option D all of these. So ठीक उत्तर होगा it indicates growth rate, option B. Last question of the session. Session ର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ. Which one of the following is considered as pioneer community in Gerarch? Which one of the following is considered as pioneer community in Gerarch? XCRARCH. Option A annual horf, B perennial horf, C scrub stage, D lichen. ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା which one of the following is considered as pioneer community in Gerarch? And the right answer is it is lichen. It is lichen. So option D. तम क्लास नेक्स्ट अच्छी बेटा 8:15 बेले तमर क्लास अच्छी. डोंट वरी तमर क्लास 8:15 बेले अच्छी. सो दैट्स ऑल. एटा थिला तमर ये पिले बायोलॉजी बोटनी रो माने 10 नंबर सेट. या परे आर्ट्स पिलांगर गोटे क्लास हबो. तापरे आमे जिबा तमर बोटनी जूलॉजी रो 10 नंबर सेट. ओके सेटा पाके भी 8:45 बेले को हबो. सी यू देयर. स्टे ट्यून मास्टर इंग्लिश. जय जगन्नाथ.